बट उस इलाके में मतलब लोग प्यार से बात करते हैं तो भी गाली देते हैं. He could turn totally crazy. He could only have revenge on his mind or something else. आइसक्रीम का एक डिब्बा लेके बैठ जाता हूँ और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ. मैं फिर ठूसता रहता हूँ. कभी कभी लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सीजन 2 में जाके सब हक देते हैं. But the choices are very different and that's what I like. Ali Fazal, welcome on Bollywood Hungama. Thank you. Thank you so much for having me. It's been a long overdue meeting. It's been really long overdue. You know, so I recently saw the first season of Mirzapur, and मुझे पता नहीं था कि यार ये why are people so crazy about it? I had no idea. Once I saw it, I came to realize that why they're crazy, because it's such a world that totally captures your mind. Second thing is that मैंने कभी ऐसे आपको imagine नहीं किया था. मैंने आपको इतना beefed up कभी imagine नहीं किया. Yeah, even मैंने भी नहीं किया था. But can we say that Mirzapur is your शोले? मतलब आप मुझे बहुत glorify कर रहे हैं. नहीं, मैं glorify नहीं कर रहा हूँ. But you know, the fact is the level of reach that the series has, and the sort of curiosity which is there around season 2. मैं एक आपका interview देख रहा था और वो उन्होंने एंकर ने कहा कि that ये बाहुबली 2 टाइप का वेट चल रहा है आप लोगों के लिए. हाँ, ऐसे कुछ हो रहा है. वो तो it's I think the whole country is waiting for it. It has been a big, I think, big game changer for me. I can't deny that. Also क्योंकि that perspective has changed, right, of what I may be able to bring to the table. क्योंकि क्या होता है कि we are usually we are perceived from what we have done in the past and not what we can do in the future. For that you need an eye, and I think that is something somebody somewhere saw, and and I'm here talking to you. Even the perception that people had about you was that there's this cool and suave guy who speaks polished English, doing school and the works. And when you're speaking that language and with that typical accent, I believe आपके मामू से आपने शायद वो accent भी शायद लिया है, or someone in your family that you've taken. Even the accent is something which is so unlike you, and that accent, it becomes part of the system of whoever is watching it. There's a slight lisp as well, right? Yeah, there are. It's actually a twang. It's not a lisp. वो जब आप round करके बात करते हैं ना कोई चीज कि इधर आओ और एक होता है इधर आओ, तो वो थोड़ा सा sometimes like it sounds a little, वो एक अजीब सा एक फ्लेवर मैंने उसमें डाला था. I think वो एक अंदाज है जो कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनसे लिया था मैंने. तो मेरे मामू का एक है लहजा है थोड़ा सा, तो I tried to use that and mix it with that with the area of मिर्जापुर. क्योंकि क्या है हमारे यहाँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ काफी दफा कि हर 100 गज पे हमारा तो डायलेक्ट बदल जाता है. तो मेरा लखनऊ से ताल्लुक होना कोई मायने नहीं रखता है when I'm actually performing something that is towards बनारस side, आजमगढ़ और इस पूरे इलाके में मिर्जापुर में. तो वो थोड़ी चीजें, छोटी चीजें थी जो, but that was also big major credit that goes to Puneet Krishna and Gurmeet, but mainly Puneet Krishna for the dialect, because वो एक हमेशा सेट पे रहते थे. So he's always helping you कि कभी जैसे मैंने गलती से भौकाल बोल दिया, अब वो भौकाल लखनऊ साइड होता है लेकिन वर्ड भोकाल होता है बनारस में. छोटी सी मात्रा का फर्क है वो. तो मैं उनको कहता था कि वो चीजें आप देख लीजिए, वो मुझे बहुत, क्योंकि मुझे खटकता है, नुक्ता खटकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ज और ज जिस तरह फर्राटे से चलता है हमारी सोसाइटी में आजकल, वो मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता है उस पे. आजकल तो हम मतलब शू शा कुछ भी बक दो चलेगा. I'm sure that there have been like hundreds and thousands of memes on Mirzapur. The moment I saw that portion when you say कि मिर्जापुर को अमेरिका बना देंगे, in terms of the guns and all that, so it's like a killer line. It's an absolute killer line. What is your favorite dialogue and or maybe from season 1?
मेरा एक डायलॉग, मतलब मुझे वो बहुत पसंद आया था, वो जो हॉर्न वाला है, जो मैं उसको मारता हूँ कि वो यार तुम, क्योंकि ये हमारी सब पूरी जनता की दुखती रग है ये, हमारी इंडिया में, कि कोई ना, जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं, कोई पीछे ऐसे पौ 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 बजाया जा रहा है, और मतलब इट्स अ मेंटल ट्रॉमा टू गो थ्रू दैट, बिकॉज वी डोंट पेशेंस नाम की चीज नहीं है। तो वो मेरा एक एक उसमें डायलॉग था, आई थॉट इट वाज रियली रियली एप्ट, one of my favorites. आई थिंक एक डिफाइनिंग मोमेंट जो सीजन 1 में था, जब वो अपनी माँ के साथ में आप बगल की परचून की दुकान पे जाते हैं, Yeah, वो जो that was दुकान another का one. जो ओनर है, तो ही सो टेरिफाइड कि एक महीने का नहीं, एक साल का आपको हम राशन मिल जाएगा हमारे वहां से। एंड देन आफ्टर दैट गुड्डू भैया ही जस्ट गोज इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, एंड वहां पर वो दंड बैठक टाइप का वो लगा रहे हैं, एंड देन ही जस्ट फायर्स इन द एयर। That element of pride, I think a lot of gangsters, they become gangsters not because of money or anything, but because of the fun element of it, maybe. Um, how was that moment for you? Because he's not someone who's supposed to be intelligent. He's someone who goes Yeah, by the moment. He lives yeah. for the moment. It's, that's very interesting what you said right now, and that's how the character is. His moments are linked from the previous moment. So this sparks the Yeah. next, and that sparks the next, and that sparks the next. So जब वो ग्रोसरी शॉप पे कर रहा है और ये सब कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, उसके दिमाग में आता है कि ये समथिंग हैज वर्कड, हिज पावर has worked, there is respect generated, एक ट्रांजैक्शन हो गया ना दो एनर्जी का, रिस्पेक्ट जनरेट हो गई Mm. माँ के लिए, बिकॉज ऑफ व्हाट ही जस्ट डिड, हिज धमकी, Yeah. पावर एडेड, एंड देयरफॉर सडन स्विच की। ये तो फिर मैं इस इलाके में भी बता सकता हूँ, मुझे अनाउंस करना चाहिए, ये मेरी एक वो है, लाइक सुपर ह्यूमन चीज है। वो धीरे धीरे the same thing starts to become bigger and bigger and bigger. Of course, that time it's just one little area where he, you know, announces that him and his brother are the undisputed, people and the saviors of that town. लेकिन उसके बाद slowly it starts to, it's like they say, right? Power corrupts, and absolute power. Okay, now when it comes to season 2, it's very apparent that why people are waiting so eagerly for the season 2, because the way the season 1 ends, it's like, I think one would want to see what happens immediately. It is such a deadly way to end it, that it's very easy to understand that why people want to see it so eagerly. Now, many a times it happens that one season it does very well, but maybe the second season does not live up to that expectation. Do you guys have any apprehensions on that one? I think it's absolutely natural to have that apprehension. We all do. Mm. Season, especially because मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि सीजन 1 के टाइम पे क्रिटिक्स होते हैं और ऑडियंस Mm. होती है। सीजन 2 के टाइम Mm. पे ऑडियंस भी क्रिटिक हो जाती है, क्योंकि अब आप सब Mm. साथ चल रहे हैं। तो यू आर अप टू स्पीड विद द स्टोरी, यू आर अप टू स्पीड विद द क्वालिटी, सो नाउ यू Mm. वांट समथिंग at par and even better to top that. So, and I feel like Gurmeet, and especially Gurmeet and Puneet and Mihir, they've managed to keep the, even though the emotions are very high, the stakes are very high, but they managed to keep the flavor of Mirzapur sort of alive through season 2. Of course, I've shot my parts and I can't speak for the whole show right now because I haven't seen it, but I think there is some fun stuff still there, and there's, of course, there's high drama and intense stuff you'll see this time, but the choices are very different, and that's what I like. हमने ज़्यादा उसको इंटेलेक्चुअलाइज नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, हमने देखा है कभी कभी लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सीजन 2 में जाके सब हक देते हैं, एंड बहुत शोज के साथ हो चुका है, बहुत मूवीज के साथ हो चुका है ऐसा। So I think, yeah, just little pressure तो रहता है, लेकिन मजा आया। I think they created honestly, Mirzapur का shoot is anyway a lot of pressure. It's just, it's a, मतलब it's a problem. मतलब shooting so many hours, outdoors होते हैं mostly on, actual sets. उसके ऊपर मुझे जिमिंग करनी होती थी, सीजन 1 में तो चलिए कुछ और ही था, 2.5 घंटा रोज हो रहा था। सीजन 2 तब भी it's still more cerebral for me, and physical both.
तो थोड़ी सी वर्कआउट में थोड़ा सा लीनियंसी थी तब भी मुझे, लेकिन रोज जाना पड़ता था जस्ट टू कीप दैट साइज मेंटेनिंग फॉर द पार्ट. So yeah, Okay, just and now I saw one of your interviews and you said that you've not seen the entire season of Mirzapur season one. So have you seen it now? You still have? no. No, I mean I've seen it in parts here and there. वो कहीं ना कहीं निकाल के जैसे 2 एपिसोड देख लिए या कहीं, बट वो एक गो में मैंने कभी नहीं देखा. Hmm. वो, but I think that's not anything against the show. I love it. I think it's great. It's Even your movies, as I an, think some of the movies you've not seen. because as an actor I feel I'm my biggest critic. मैं अपने को, Hmm. मेरे 2 दिन घुस जाते हैं, फिर मैं 2 दिन लिटरली मैं ना आइसक्रीम का एक डिब्बा लेके बैठ जाता हूँ और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं फिर ठूसता रहता हूँ. तो so I think I just Right. avoid that trauma, but now I watch here and there. डबिंग में तो देख ही लेते हैं हम लोग, and Right. जो भी थोड़ा बहुत होता है इधर उधर. I know generally the premise. But you It's not- but do you think that it's a good idea to maybe be slightly detached in a way from your work? It's not that you don't take your work passionately, you do, but at times actors they tend to get too obsessive about everything that they're doing, and maybe a bit of detachment is something that keeps them, because it's many a times it's what you're looking forward to doing next rather than looking back. Yeah. I mean, if it's about detachment you're talking about, then yes, we need Mm. that. We need that, especially in our lives. We guys are very vulnerable people, right? So Mm. it's very easy for us to latch on to something that seems good, and the moment we start looking good, हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए, and we get attracted to that, and we get latched onto that. But we have to constantly keep breaking and reinventing and breaking and reinventing, and that's how हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी. I feel I constantly have to go back to basics. Every time I feel I've done a great show or a great scene, even one scene also, I go back. I have to center myself. uh, I mean I might sound very very wise or anything, I'm not, but I just feel कि थोड़ा जरूरी है. कुछ नहीं तो छुट्टी ले लो. हम छुट्टी नहीं लेते हैं. पहले मैं, मेरे आइडिया छुट्टी का होता था कि शूट पे जाने को मिलता है बाहर, but that's not छुट्टी. Mentally we are still in work mode, and I think I realized that very recently in life, that just छुट्टी लेना, even if it's 2 days, is very important to be able to just get away. I saw one of your interviews where you said, where you were asked that आपकी फिल्म आ रही है तो उसको क्यों देखना चाहिए टाइप. So you said कि that options हैं, जिसको जो देखना है वो देख सकता है. मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि वो, this is something which I've noticed in Amir Khan and Shah Rukh and Salman as well. They never say that हमारी फिल्म की USP क्या होती है. अगर उनसे पूछा जाता है तो they get a bit pissed off. They are like कि जिसको जो देखना है वो देखे, और हमने ये किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आके देखिए उसको. बस यही तो है. तो अगर विजडम की बात है तो मेरे ख्याल से कुछ आप सही सही नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं. ये लोग तो दिग्गज लोग हैं, मतलब लोगों ये खेल खेल चुके हैं, एंड देव मेड सम ग्रेट ग्रेट सिनेमा. लेकिन बट बात बिल्कुल सही है. मैं यही कहता हूँ कि भाई अच्छा लगे तो देखो, नहीं है तो आजकल तो और भी बल्कि डेंजरस हो गया हम लोग के लिए. वी आर वन पॉज बटन अवे फ्रॉम रिजेक्शन. तो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यू कैन प्रेस अस अवे एंड मूव एंड स्वाइप, मूव टू द नेक्स्ट शो, एंड इट कुड बी Right, गेम ऑफ right, right. थ्रोन्स और व्हाटएवर, सम हॉलीवुड जो भी है, और अ मूवी. Tell us the journey of season 2 for Guddu bhaiya. That was hard. It was a bit of a lonely one, क्योंकि इस दफा कुछ कुछ किरदार नहीं थे, कुछ दोस्त नहीं थे. Why I say lonely is not because, मतलब विक्रांत के साथ एक अच्छी टीमिंग हो गई थी मेरी, तो वो जुगलबंदी चलती रहती थी, एंड एक्टिंग का बोझ भी थोड़ा सा बढ़ जाता था. तो इस दफा अपनी टीम में थोड़ा सा एक वो लगा. लेकिन फिर श्वेता इज देयर. आई थिंक शीज हर कैरेक्टर हैज बीन रियली जूस्ड अप. Harshita's character, who plays my sister Dimpy. Uh, Right. लेकिन for me the prep was, the good part is with this, that we had shot season 1, and season 1 acts like a virtual memory. कि ये scenes हो चुके हैं, ये events हो चुके हैं for the character in season 2. But my take on this was, I told Gurmeet this. I said there are 10 ways that an actor could play this. एक ह्यूमन, एक आदमी की लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है,
उसकी आधी फैमिली वाइप आउट हो जाती है उसके आंखों के सामने, how does he react? Either he could not go into violence, he could run away, he could turn totally crazy, he could only have revenge on his mind or something else. So I just took that little decision कि वो थोड़ा सा उसकी एक you know, he starts to use his brain a little. वो एक like I said this Okay. earlier, that you know, he's a lazy man, he's not dumb. He's always been lazy because his father's a smart lawyer, his mother is a genius type woman, थोड़ी सी किसकी sister is very smart, brother was a smart guy. The apple doesn't fall far from the tree, right? So this boy was just lazy. वो अपना मतलब बॉडी बिल्डिंग में घुसे हैं और संजय दत्त फैंस, यू नो, जैसे होते नहीं थे अपन मतलब छोटे शहरों में, पढ़ाई वढ़ाई में कोई वो नहीं है, बट नाउ मजबूरी में कितनी चीजें करनी पड़ती हैं हमारे देश में। तो मतलब ये अगर किसी को नहीं पता है तो मतलब ये किसी को पता है तो हम ही लोग को पता है ना कि आउट ऑफ बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस थिंग्स पीपल यू नो मेक अस डू ऑड जॉब्स। मैंने कितनी की है मतलब अपनी स्टार्टिंग में सिर्फ पॉकेट मनी कमाने के लिए, कॉलेज में जब थे, कॉलेज की फीस भरनी होती थी, तो यू नो लाइफ पुशेस यू टू यूज योर ब्रेन एंड मैं ज्यादा उसको इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ किया है। How tough was it for you to just get into this expletive zone? Apparently, your father was told you that ये थोड़ा सा गालियाँ थोड़ी सी ज्यादा थी. कुछ लोगों ने मतलब उसको पसंद किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। यस, आई डू फील ज्यादा थी, बट उस इलाके में मतलब लोग प्यार से बात करते हैं तो भी गाली देते हैं। अब वही चीज आप थोड़ा सा दूर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की तरफ आएंगे तो आदमी बुरा मान जाएगा कि आप तू तकार करके बात कर रहे हैं, आप मतलब यू नो ऐसे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। वो फिर अब उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं? वो एक शो में था, बट इस दफा मैंने ट्राई किया है फ्रॉम माय ओन लिटिल फॉर माय ओन लिटिल सेटिस्फैक्शन। मैंने जहां जहां मुझे जरूरत नहीं थी, आई थॉट इफ आई कैन कन्वे दैट विदाउट you know really voicing, I'll try. So, You know, when I'm talking to you, I must tell you that you know there were several surprising moments because क्या होता है many times film industry में actors को stereotype कर दिया जाता है कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है. जो आपका वो moment है जब आप शुक्ला को मारते हैं, yeah, yeah. you know, and the way you are holding the gun, that's like Sanjay Dutt, and that's something that it's very difficult to fathom that Ali Fazal will be doing it, and it looks so convincing. Like you know that moment, अगर वो आप किसी सिनेमा हॉल में देखें, तो वो सीटियों वाला मोमेंट हाँ वो, और वो बहुत मतलब उस शूट के दिन बहुत भसड़ हो गई थी, मतलब कुछ कोरियोग्राफ नहीं था, किसी को कोई आइडिया नहीं था क्या करना क्या है। आई रिमेम्बर वो थोड़ा सा टफ था, मैं बहुत अनहैप्पी था उस दिन कि मैं यार कुछ अच्छे से शूट नहीं किया, कोरियोग्राफ करके नहीं किया। So which is why I used suddenly all these surprises that you see, but I suppose it worked.